Yes student. अब इस क्वेश्चन में देखिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. What is the kinetic energy and potential energies of the electrons? तो हम देखें kinetic energy जो होगी, kinetic energy of hydrogen atom हमको दिया हुआ है यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो kinetic एनर्जी जो हो जाएगी वो माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये हो जाएगा आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आपकी एनर्जी आ गई kinetic एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 2 टाइम्स द kinetic एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो ये इसका 2 टाइम्स ले लें 13.6. तो ये हो जाएगा आपका 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो फाइनली अब ये kinetic एनर्जी हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है. वी कैन कन्वर्ट इट इनटू जूल्स इफ इट इज रिक्वायर्ड. ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वी विल नो वेरी वेल, दैट इज 1.6 into 10 raised to the power minus 19 जूल. इसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो you will get the answer in joules. Basically due to some. Okay, so finally we have got this answer. Here we are concluding with these 3 questions. It will be in the part 2 because due to some technical error we could not connect it again. Okay, thank you.